Hi guys, this is Sakshi here on Math classes. In this video, we will discuss the part 2 of motion, and in this we will start from the topic graphical representation of motion. When we represent motion on graph, it is called graphical representation of motion. Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events. So let's start with distance time graphs. Distance time graph for uniform speed. We know uniform speed. If speed is increasing with same rate or decreasing with same rate, it is called uniform speed. So let's see its graph. Distance time graph for uniform speed is a straight line as shown below. Okay, we can see here, suppose this is the graph. These are the units marked. Time in hours, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour. Distance in kilometers, 10 kilometer, 20 kilometer, 30 kilometer and 40 kilometer. By this arrow we can understand easily. In 1 hour we are traveling 10 kilometer. You can see from with the help of dotted lines. In 2 hours we cover 20 kilometer. In 3 hours we cover 30 kilometer. In 4 hours we complete 40 kilometer. So when we draw time graph for uniform speed, there is a straight line between the units. So this is the nature of time graph for uniform speed. Okay, let's see the distance time graph for non-uniform speed. Distance time graph for non-uniform motion is obtained in the form of curve given below. When we draw distance time graph for non-uniform motion, we get a curve like this. When the speed is increasing, we get a curve like this. When the speed is decreasing, we get a curve like this. Here you can see distance is less while the time is more. You can see here the distance is more and the time is low. So this shows increasing speed and this shows decreasing speed. Okay, what happens if there is a object in rest? Then suppose this is the graph, this is time, this is distance, and if a body is stationary, there will be a straight line like this. Okay, like this. Time is passing but the distance is not increasing. This shows that the body is stationary or is at rest. Let's move to the next topic, which is velocity time graph. Velocity time graph for uniform acceleration. We know acceleration is the change of rate in velocity. Okay, for uniform accelerations means the rate is changing uniformly. When the rate of velocity is changing, velocity change with same rate, it is said to be changing uniformly or uniform acceleration. So we will see the graph for uniform acceleration. For uniform acceleration, there is a straight line as uniform speed. We can see this is a straight line. These are the units marked. This velocity. Here is time. Second, we can also see this shows that the acceleration is uniform. As velocity of the body is uniform, neither in magnitude nor its direction changes. Therefore, the height of its velocity time graph will remain the same all instant of time. Here you can see this. Okay, I will show you something. This is acceleration when acceleration is 0. Acceleration equals to 0. In this case, if there is a straight line like this, if there is a straight line not curved line like this shows negative acceleration, and if there is a curve like this, it shows positive acceleration. Here y acceleration is 0 because velocity is same. Okay, that is not changing its rate. That's why acceleration is 0. If it will change the rate, if it will increase the rate, it will be positive acceleration, and if it will decrease the rate, it will be the negative acceleration. Okay, let's move to the next topic, which is velocity time graph for non-uniform acceleration. Time graph for non-uniform acceleration is obtained as a zigzag line as follows. See, this is the graph, this is the time, this is the velocity, and if we draw graph for velocity time graph for non-uniform acceleration, we get a curve like this. You can see this is the curve we get on drawing time graph for non-uniform speed. Okay, and the next part is equations for uniformly accelerated motion. There are 3 equations for motion. First, concentrate on first equation of motion. This is v equals to u plus at.
where V stands for final velocity, U stands for initial velocity, A stands for acceleration, and T stands for time. V final velocity equals to initial velocity plus acceleration multiplied by time. Using this formula is derived using the formula of acceleration. How? Acceleration formula is in final point minus initial velocity upon time. So when we bring t here, the sign is changed. हमने मैथ्स में पढ़ा है कि साइन चेंज हो जाता है जब हम उसका साइड LHS से RHS या RHS से LHS करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे जब डिवीजन में है तो इधर आके वो A इंटू टी हो जाएगा, यानी वी गेट दैट AT इज इक्वल टू V माइनस यू. When we replace u in this side, here it is in minus. यहाँ पे माइनस में है इसलिए जब हम उसको इस साइड लाएंगे तो फिर वो प्लस u हो जाएगा, जिससे हमें इक्वेशन मिलती है v इक्वल्स टू यू प्लस AT और AT प्लस यू इक्वल्स टू v. सो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं. Let's see the second equation of motion. Second equation of motion is based on position-time relation. It is s equals to ut plus 1 upon 2 at square. Here s stands for distance, u stands for initial velocity, t stands for time, plus we all know 1 upon 2 at square, where a stands for acceleration and t square stands for time square. S equals to distance, and this equation of motion is derived from the average velocity. Okay, average velocity, we all know the formula of average velocity, initial point plus final point upon 2. As we all know, distance equals to average velocity multiplied by time. हमारा जो average velocity है उसको अगर हम time से multiply करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमने उस given time में कितना distance cover किया. इससे हमें formula मिलता है s equals to u plus v upon 2 into 2. हम v की वैल्यू जानते हैं, v इक्वल्स टू AT प्लस यू, तो उसको जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे देन वी विल गेट u प्लस AT. ये u प्लस AT आया क्योंकि v की हमने पिछले ही इक्वेशन में वैल्यू निकाली थी जो थी u प्लस AT. ओके, अब हम इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. s इक्वल्स टू t से हमने सबसे पहले u प्लस यू होता है हमारा 2u प्लस AT अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई t. s इक्वल्स टू 2ut. t is multiplied by 2u, we get 2ut plus AT multiplied by t, that is AT square upon t, 2. So we derive the second equation of motion, which is s equals to ut plus 1 upon 2 AT square. So let's see the third equation of motion. It is quite difficult, so listen carefully. Third equation of motion is 2as equals to v square minus u square. V stands for final velocity, u stands for initial velocity, a stands for acceleration, and s stands for distance. This is derived from both second equation and first equation. Second equation, s equals to ut plus 1 upon 2 AT square. This is our first equation. We take first equation, AT equals to v minus u. अब ये कैसे मिला? AT इक्वल्स टू v माइनस यू हमने यहाँ पे देखा था. उसके बाद t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ पे आके ये डिवीजन में आ जाएगा. देयरफॉर t विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a. अब हमें t की भी वैल्यू मिल गई. अब हम इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे. देन वी विल सी s इक्वल्स टू u मल्टीप्लाइड बाय t था, तो और t की वैल्यू हमें दी थी v माइनस यू अपॉन a, तो उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे. प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू, यहाँ पे t स्क्वायर था इसलिए t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन a को सब्सटीट्यूट करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे. यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a. एंड व्हेन वी सम दिस a प्लस b, a माइनस b का जो स्क्वायर का फॉर्मूला है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a स्क्वायर. हेयर इज a स्क्वायर, यानी कि a से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमें a मल्टीप्लाइड बाय a इक्वल्स टू a स्क्वायर. देन वी विल गेट uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन a. देन दिस इज द व्हाट वी गेट. We take common 2a, 2 multiplied 2uv minus 2u square plus here is 2, so we will multiply by 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मिलेगा. इसीलिए जब इसमें हम प्लस करेंगे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2av 2uv, यहाँ पे 2uv माइनस में है यहाँ पे प्लस में है इसीलिए वो कैंसिल हो जाएंगे.
बचा हमारा माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर हो जाता है माइनस यू स्क्वायर, और प्लस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ही रहता है। इस तरह हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये 2a जब इस साइड आएगा तो वो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की इक्वेशन बनाएगा, जिससे हम अपना थर्ड इक्वेशन भी डेराइव कर लेते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डेराइव फ्रॉम बोथ सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। So guys, our video is finished. Please like the video and subscribe our channel.